हे गाइस, वेलकम टू द मैकेनिकल सेक्शन। आज हम जे विनेल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। हमने ऑलरेडी 3 पार्ट्स बना लिए हैं और ये 4th पार्ट है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। 86th क्वेश्चन है, व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस इन इट इज। यू हैव 4 ऑप्शन: ए 0.5, बी 1, सी 1.5, डी 2। सो गाइस, जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है वो हम निकालते हैं चेंज इन स्ट्रेन अपॉन ओरिजिनल स्ट्रेन। यहाँ जो चेंज इन स्ट्रेन है वो है 1 और ओरिजिनल है 1, तो 1:1 इज इक्वल टू 1। तो गाइज योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1। नेक्स्ट, द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ अ बीम टू bear maximum bending movement is। you have 4 option: A square, B circular, C rectangular, D I section। so guys, right answer is D I section। Euler's buckling theory is applicable for। you have 4 option: A short column, B long column, C medium long column, D all of these। so guys, right answer is long column। next, a long column fails by। you have 4 option: A crushing, B tension, C shearing, D buckling। so guys, right answer is option D buckling। next, slenderness ratio is the ratio of। you have 4 option: A maximum size of column to minimum size of column, B width of column to depth of column, C effective length of column to least radius of gyration of the column, D effective length of column to width of column। so guys, your right answer is L by under root K। Option C is right answer, effective length of column to least radius of gyration of column। next question, which of the following is close to the purest form of iron? first option: A cast iron, B wrought iron, C grey iron, D mild steel। so guys, right answer is option B wrought iron। इसमें 0.05% से 0.30% तक कार्बन प्रेजेंट होता है रॉट आयरन में, जो कि प्योरेस्ट फॉर्म है आयरन की। नेक्स्ट, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन लो कार्बन स्टील। यू हैव 4 option: A 1%, B 0.15%, C 0.87%, D 0.5%। so guys, right answer is option C 0.87%। next, coordinate number of face center cubic structure is। you have 4 option: A 4, B 8, C 12, D 16। so guys, right answer is C 12। BCC का होता है 8। नेक्स्ट, 18/8 स्टेनलेस स्टील कंटेन्स। यू हैव 4 option: A 18% निकिल, 8% क्रोमियम, B 18% क्रोमियम, 8% निकिल, C 18% टंगस्टन, 8% निकिल, C 18% टंगस्टन, 8% क्रोमियम। so guys, your right answer is option B 18% chromium and 8% nickel। next, unique property of cast iron is its high unique property। so you have 4 option: A malleability, B ductility, C hardness, and D damping characteristics। so guys, your right answer is D damping characteristics। लेथ मशीन्स के जो बेड होते हैं वो कास्ट आयरन की इसी प्रॉपर्टी की वजह से बनाए जाते हैं, क्योंकि ये डैम्पिंग कैपेसिटीज़ की ज़्यादा रहती है। डैम्पिंग कैपेसिटी की वजह से ही लेथ जो बेड है वो कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 1841 HSS टूल इज। यू हैव 4 option: टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम, B molybdenum, chromium, vanadium,
C chromium nickel carbon, D copper zinc tin. So guys, your right answer is option A, vanadium, chromium, tungsten, chromium or vanadium. Next, pure iron is a substance of. You have four options: A ferrite, B perlite, C austenite, D ferrite and cementite. So guys, right answer is option A, ferrite. Next, which metal coating is used in the mirror? You have four options: A lead, B tin, C gold, D brass. So guys, right answer is lead. Sometimes silver is also coated in iron, in mirror. Next, which of the following fundamental component of atom is uncharged? You have four options: A proton, B neutron, C electron and D पीसी. सो गाइज इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टूल इज यूज फॉर रैपिड मशीनिंग ऑफ हार्ड मेटल्स? सो गाइज यू हैव फोर ऑप्शन: ए सीमेंटेड कार्बाइड, बी हाई स्पीड स्टील, सी सैटेलाइट्स, डी नन ऑफ दीज. सो गाइज राइट आंसर इज ए सीमेंटेड कार्बाइड. Next question. Purpose of normalizing is to. You have four options: A improve strength, B increase hardness, C remove internal stresses, D none of these. So guys, right answer is option B, increase hardness. Next, which of the following metals does not have hexagonal close packed structure? So guys, you have four options: A magnesium, B zinc, C cadmium, D copper. So guys, right answer is copper. Which element makes stainless steel corrosion resistance? You have four options: A vanadium, B chromium, C carbon, D sulfur. So guys, right answer is chromium. Vanadium is generally used for machining quality and chromium is for corrosion resistance. Next, the purpose of formation of new grains on heating metal is called. You have four options: A recrystallization, B oxidization, C microstructure, D hardening. So guys, right answer is recrystallization. रिक्रिस्टलाइजेशन प्रॉपर्टी होती है जिस टेम्परेचर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पर जब मटेरियल को हीट किया जाता है तो उसके बाद उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है. नेक्स्ट, ब्रास इज एन alloy ऑफ. यू हैव फोर ऑप्शन: कॉपर एंड जिंक, बी कॉपर एंड टीन, सी आर्सेनिक एंड टीन, डी गोल्ड एंड टीन. तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कॉपर एंड जिंक. नेक्स्ट, which of the following has maximum ductility? You have four options: A copper, B mild steel, C cast iron, D 1841 steel. Vanadium, chromium or tungsten, chromium and vanadium steel. So guys, right answer is option B, mild steel. Paramagnetic alpha iron changed to gamma iron at following temperature. You have four options: A 768 degrees Celsius, B 1440 degrees Celsius, C 908 degrees Celsius, D 1539 degrees Celsius. So guys, right answer is 908 degrees Celsius. Generally 910 degrees Celsius होता है. Uractoid steel contains following percentage of carbon. You have four options: A 0.02, B 0.30, C 0.63, D 0.87. So guys, right answer is 0.3. Next, the material having same elastic property in all the direction is called. You have four options: ideal material, B uniform material, C isentropic material, D practical material. So right answer is option C, isentropic material. Next, the ability of material to resist softening at
higher temperature is known as? You have four option: A creep, B hot tempering, C hot hardness, D fatigue. So your right answer is hot hardness. It is also called red hardness. The slowest cooling rate is achieved when steel is quenched in. You have four option: A fused salt, B air, C brine, D mixture of water and oil. So guys, your right answer is option B, air. So guys, thanks for watching. Please stay with me and subscribe my channel, like my channel. Thank you.